एक समय था जब सऊदी अरब ऐसे कामों के लिए जाना जाता था। They say Saudi Arabia is the primary manifestation of Islam. It points a strong finger to Saudi Arabia and the role they played in funding the 9/11 attack. The world has a right to know the role that Saudi Arabia plays in funding terrorism. Who funds so-called terrorism? A report in the UK points to Saudi Arabia. They promote attacks on symbols of Western culture like concerts at Manchester and the Bataclan Theatre. जो देश एक समय पर पूरी दुनिया के अंदर एक्सट्रीमिज्म फैला रहा था, आज उन देशों के अंदर कुछ और ही चल रहा है। Is on the rise in Saudi Arabia. BAPS Hindu Mandir Abu Dhabi in UAE is a traditional Hindu place of worship. Site is located at Abu Murekha, which is near Al Reba of the Dubai Abu Dhabi Sheikh Zayed Highway. Welcome, Your Holiness, in the Emirate of Fujairah. The Crown Prince of Saudi Arabia said women in the Islamic country do not have to wear head covers. In a break from tradition, Saudi Arabia is set to open its first liquor store. It has decided to restrict the volume of loudspeakers at mosques. और सबसे बड़ी बात यह है कि यूएई और सऊदी अरेबिया जैसे देश भारत के सबसे करीबी देश बन चुके हैं। Prime Minister Narendra Modi broke the protocol by hugging the Saudi Crown Prince upon his arrival. Indians in Saudi Arabia had a large part in the economic growth of Saudi Arabia, and we consider them to be a part of Saudi Arabia. We watch and take care of them like we take care of our own citizens. सऊदी सिंगर भारत की शान के लिए गाने गा रहे हैं। मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू, ए वतन मेरे वतन। पाकिस्तान जो इन देशों को अपना माई बाप मानता था, आखिर ये काया पलट कैसे हुई और भारत ने ये मास्टर स्ट्रोक कैसे खेला? अरब देशों के पास बहुत सारा तेल था, उस तेल की वजह से उनको कभी काम धंधा नहीं करना पड़ा था, पैसा ही पैसा था और उस पैसे का इस्तेमाल उन्होंने दुनिया भर में, खास तौर पर एशिया व इंडिया के अंदर वहाँ विषम और सालाफिशिया को हमेशा एक्सपोर्ट करता था, कभी कभी तो सीधा आतंकवाद को भी सपोर्ट करता था। Many of these preach extremist literature. They promote attacks on symbols of Western culture like concerts at Manchester. The American people, the American citizens of the world has a right to know the role that Saudi Arabia plays in funding terrorism. A report in the UK points to Saudi Arabia and Theresa May's government's under pressure. These links to terror aren't new. The 9/11 terror attacks in the US was the time when the world woke up to Saudi Arabia's links to terror, and 20 years on, this country continues to be covertly and overtly supporting terrorism. 2011 और 2013 के बीच के अंदर 25,000 बाहमी प्रोटेस्ट इंडिया के अंदर आए थे। 1700 करोड़ रुपए इस्लामिक मस्जिद या फिर इंस्टीट्यूट के अंदर इन्वेस्ट किया था। आईबी रिपोर्ट के मुताबिक भारत में इंडिपेंडेंट के टाइम सिर्फ 88 मदरसे ही मौजूद थे, वो भी 2006 के अंदर बढ़कर 5 लाख मदरसे हो गए थे। इस मदरसों के अंदर 30 लाख बच्चे कम से कम पढ़ते थे। 14 बिलियन अरब देशों के साथ इन्वेस्ट किए गए थे। 400 करोड़ रुपए सीधे सीधे मस्जिद और मदरसा बनाने के लिए इन्वेस्ट किए गए थे। आजकल हालात उस समय से भी काफी बहुत ज्यादा डिफरेंट हो चुके थे। आज देखिए आखिर हो क्या रहा है। Not just any temple, the biggest one in the country, the BAPS Hindu Mandir in Abu Dhabi, a symbol of harmony between two civilizations and friendship between two countries. The city of Makkah in Saudi Arabia hosted the second Open Yoga Asana Championship. The event was organized by Al Veda Saudi Club. Saudi Arabia is set to introduce yoga in major universities across the country. Major universities in Saudi Arabia to support and promote yoga over the next few months. इतने तो हमारे नीतीश कुमार नहीं पलटते जितना कि ये लोग पलटते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। सऊदी अरेबिया के अंदर देखिए स्कूलों के अंदर रामायण और महाभारत सिखाई जाएगी। Ramayana and Mahabharata, two of the greatest epics from India, will soon be taught in the schools of Saudi Arabia. This decision has been taken under the Vision 2030 initiative of the Saudi Crown Prince. हाल ही सऊदी अरेबिया के अंदर इंडियन मिनिस्टर स्मृति ईरानी गई थी। वो इस्लाम के बहुत ही पवित्र शहर मदीना के अंदर गई थी और ना सिर्फ उन्होंने एक नॉन मुस्लिम महिला को मदरसे में जाने दिया, बल्कि उन्होंने अपना सिर भी अच्छे से नहीं कवर किया था। Union Minister Smriti Irani led a delegation to Medina, Saudi Arabia over the weekend. The official statement from the Government of India highlighted warm ties between India and Saudi Arabia, expressing gratitude for the Ministry of Hajj and Umrah's gesture in facilitating the Indian delegation's visit to सऊदी अरेबिया के राजा है मोहम्मद बिन सलमान। उन्होंने काफी बड़े-बड़े चेंज किए। 2 days ago, Mohammed bin Salman had ordered the Ministry of Islamic Affairs in Saudi Arabia to publish orders that all mosques in the kingdom would be banned from broadcasting Ramadan prayers
on, quote, all media outlets in all forms. The laws are very clear and stipulated in the laws of Sharia that women wear decent, respectful clothing like men. This, however, does not particularly specify a black abaya or a black head cover. The decision is entirely left for women to decide what type of decent and respectful attire she. इस समय सऊदी अरेबिया और दूसरे देशों के साथ मिलकर ग्रो और डेवलप करना चाहता है और इसीलिए सऊदी अरेबिया दूसरे देशों के डेवलपमेंट को बढ़ते हुए देखकर उनके साथ हाथ मिला रहा है और उन देशों के साथ अच्छा रिलेशनशिप भी बनाया जा रहा है। इस तरह वे सभी देशों के साथ डाइम एग्जीपोल कर रहा है। भारत में इस सिपा एग्रीमेंट के अंदर एनवायरनमेंट, एनर्जी, क्लियर बहुत सारे एरिया के अंदर भारत और यूएई आपस के अंदर कोलैबोरेट करेंगे। यूएई और इंडिया के अंदर दोनों के बीच एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक कोलैबोरेट हो रहा है जिसमें मुंबई से लेकर दुबई तक एक अंडर वाटर ट्रेन चलाई जाएगी। यहाँ तक कि मोदी जी ने 5 बार यूएई का दौरा भी किया है और वो यूएई जाने वाले पहले प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। मैं आप सब लोगों को यह पूछना चाहता हूँ अगले 10 सालों के अंदर इंडिया और अरब देशों के बीच में रिलेशनशिप कैसे डेवलप हो पाएगी, आप कैसे इन्वॉल्व होते हुए देखेंगे। इस रिलेशनशिप के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर जवाब दीजिए। इन सभी चीजों का क्रेडिट आखिर किसे जाता है? बाकी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और गालियां जो चाहे कमेंट बॉक्स के अंदर दे सकते हैं और इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखे। जय हिंद, जय श्री राम।